Welcome to SIMC Voices, an initiative taken by the students of Symbiosis Institute of Media and Communication. I'm Meghna Barik. And I'm Kumar Siddhartha, and we are the host for today. We bring you stories from all across Pune. Without further ado, let's start with the bulletin. Our first story is about the Sakshi Savitri Committee being implemented across all schools in Maharashtra to ensure the safety of boys and girls. While promoting a healthy and equitable environment, our reporter Drumil Modi and Abhijay Rajvesh will give us an insight about the committee. The Maharashtra state government has mandated the formation of Sakshi Savitri Committee in all schools to enhance student safety and foster equitable environment. The initiative follows alarming number of abuse, aiming to train staff, promote gender equality, and enhance the well-being of students. The committee is responsible for offering counseling sessions to both students and parents, raising awareness about government education schemes, and providing career guidance, while also allowing dropout students to re-enter the education system. The initiative will launch self-defense training program for girls, fostering a secure and supportive environment in schools. I think now that the government has come forward and said that we have to implement it, we formed our committee. It has the management people from the management, teaching staff, plus an Anganwadi worker or somebody from the NGOs. Then we have the medical fraternity people and student representatives, both boys and girls. And I feel as a school, this is a very good move by the government. Almost 2 years after the announcement, the Sakshi Savitri committees are largely absent from Maharashtra schools. Despite a government mandate in March 2022 to establish these committees aimed at ensuring student safety and gender equality, the progress has been slow. However, the Education Ministry has now stressed its mandate, especially after the Badlapur assault incident, claiming a total of 4,861 primary and secondary schools across Pune to have formed Sakshi Savitri committees as of September 27, 2024. No data for the other cities in the state have been released yet. This is Drumil Modi with cameraman Abhijay Rajvesh for SIMC Voices. Moving on to the next story, let's see how idol makers of Kasba Peth, Pune talk about their seasonal ups and downs as they gear up for Diwali sales. Our reporter Anvesha Dash and Ishna Dashotar will provide us with more information. With festive season around the corner, different idol makers in the city of Pune are busy in making and preparing as well as sales of these idols. We are here at Kasba Peth to know the stories of different idol makers of the area and how the festive season and the off season looks like for them this year. जब सेल चालू रहता है, अभी काम चालू रहता है, एक कम समय में ये मूर्तियाँ तैयार होती हैं, इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और अभी ये ख़त्म होने के बाद वो गणपति का काम चालू रहता है हमारा, वो साल भर चालू रहता है, क्योंकि वो होलसेल का रहता है, वो अलग अलग दुकानों पे जाता है, वो अलग अलग सिटी में जाता है, तो वो साल भर चालू रहता है वो का। हाँ, फिर वो संक्रांत का रहता है, छोटे छोटे वो मटके रहते हैं, छोटे छोटे संक्रांत में जो पूछते वो रहते, ये ऐसा बैल रहते, ये रहते साल भर, ये धूपदानी वगैरह ऐसा कुछ सब रहता है, भगवान के लिए जो लगता है वो सब रहता है। तो साल में ये चलता है। और सीज़न के टाइम गणपति के टाइम गणपति रहते हैं, देवी के टाइम देवी रहते हैं, ऐसा है। और अभी दिवाली का समय है, उसके बाद दिवाली का वो छोटे छोटे आते ना, वो खिलौने वो रहेंगे। अभी बढ़ता है, हर साल में बढ़ता है, कलर का कीमत बढ़ता है, पीओपी का कीमत बढ़ता है, उससे वो सब बढ़ जाता है, बजट में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। वो तो रहती है वो थोड़ा, लेकिन हमारा साल भर काम चालू रहता है। गणपति बनाने में बहुत दिन लगता है, तो दिवाली के बाद गणपति का काम चालू रहता है, और साल भर चालू रहता है। गणपति के बाद ये कम टाइम मिलता है, इसलिए उसका प्रोडक्शन कम रहता है, फिर दिवाली का काम चालू। Situation seems hopeful for bigger shop owners. However, smaller laborers have to find alternative jobs after festive sales. सीज़न नहीं रहता ना, तब मैं ऑटो चलाता हूँ। हाँ, मतलब कम से कम देखो अभी दीपावली हो जाने के बाद 3 महीने तो कुछ रहता नहीं अपने पास, मार्च अप्रैल के बाद वापस चालू हो जाता है। तब तक तो मैं ऑटो चलाता हूँ। अब इसमें कोई आएगा ऐसा नहीं क्या।
कुछ बनाने के लिए, तो फिर देता ही नहीं, तो फिर कैटरिंग चलाता है। हाँ, हर का आदमी का अलग अलग। कोई कोई का क्या रहता है, जो खुद बनाते हैं ना, तो उनका क्वांटिटी में करने के लिए उनको साल भर पूरा करना पड़ता है, तब वो उनका क्वांटिटी बनता है। इसे अपना क्वांटिटी नहीं रहता, अपना थोड़े में रहता है, इसका सब सीजन बाय सीजन करते हैं। Hardships and small profits seem to be scattered for different idol makers in this area, but they still continue to make our festivals bright and vibrant. With camera person Anvesha Das, this is Ishna Dashotar reporting for SIMC Voices. Our next story is about how unseasonal rain have devastated Khataw Taluka, and because of that, hundreds of acres of farmland have been submerged, which led to destruction of crops. Our reporters Pranav Mathur and Arish Mujawar will provide us with more details. In a drought-prone Khataw Taluka of Satara district in Maharashtra, recent unseasonal rains have devastated the local agriculture community. Hundreds of acres of farmland are now underwater, leading to significant crop damage and leaving farmers under distress. अरे गरीब शेतकऱ्याचं एवढं नुकसान झालेलं आहे, हे काय करणार? आम्ही आता कुठे जायचं, काय खायचं? Ganpat Hanumat Deshmukh, an urad dal farmer from the village of Maini, is one of the many affected. His 4-acre urad dal crop has been completely ruined by waterlogged fields. The heavy rains have left fields knee-deep in water and mud, causing crops to rot and resulting losses worth lakh of rupees. मायबाप सरकार बघा आमच्याकडे डोळे उघडून, गरिबाची काय परिस्थिती झाली आहे. या परतीच्या पावसानं आमचं घरदार वाहून गेलं, शेत जमीन वाहून गेली, पिकं पाणी वाहून गेली. गरिबाचं खूप नुकसान झाले. माझ्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. त्यांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आहेत आणि ही अश्रू सरकारला पाहत नाहीत. सरकारचं त्याच्याकडे लक्ष नाही आणि आम्ही गोरगरिबाने आता कुठे जायचं? आमचा हातातोंडाशी आलेला घास निघून गेलेला आहे. आम्ही आता आमची बायका मुलं कशी जगवायची या विवंचनेमध्ये आहे. तरी कृपया करून सरकारनं ह्याच्याकडे लक्ष द्यावं आणि गोरगरिबांना न्याय द्यावा ही आमची विनंती आहे. ही परिस्थिती खूप वाईट आहे. सर्व पिकं गेलेली आहेत. आम्ही आता करणार काय? तरी सरकारनं ह्याच्याकडे ताबडतोब लक्ष द्यावं आणि माझ्यासारख्या अनेक गोरगरीब शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा ही विनंती. Farmers across Khataw Taluka are facing similar hardships. The unseasonal rains have destroyed their livelihood, so the farmers are calling on the government for immediate assistance. This is reporter Arish Imtiaz Mujawar with camera person Pranav Mathur, SIMC News, Pune. Pune travelers are facing price hikes in bus fares amidst the upcoming festive season. Our reporters Payoshi Bisht and Trisha Ghosh will provide more information about the same. In Pune, travelers are facing significant challenges as they prepare for the upcoming festive season, particularly during Navratri and Diwali. With increased demand for bus services, many are grappling with steep fare hikes that can strain their budgets. To keep a check on prices, Pune Regional Transport Office has launched a special drive to regulate tourist bus operations. However, private bus operators feel differently. As they have to accommodate many passengers with a limited number of seats, they have raised the hike by a minimal amount. सीजन में ही मैम हमको कवर अप करना रहता है, बाकी टाइम में हम लोग कवर अप नहीं कर पाते. ऑफ सीजन में देखा जाए, ऑफ सीजन है तो गाड़ी तो वैसे ही चलना है, 10-15 सीट पे तो जाना ही जाना है. लेकिन ऑफ जो ये पीरियड कवर करने के लिए तो हमको सीजन जो आता है, जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, जो त्योहार आ जाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 10% चार्ज एक्स्ट्रा ये करते. आज गवर्नमेंट का बस का फेयर कितना है? 625. हमारा प्राइवेट सेक्टर वाले का बस का टिकट है 500. ये है पुणे टू मुंबई की जर्नी का 500 प्लस GST 525, तो 525 रुपए हमारा टिकट है. तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑफ सीजन में हम लोग 450 में जर्नी करवाते हैं, लेकिन सीजन जो आ जाता है तो उसमें हम लोग 550 रुपए करते हैं. 20% सिर्फ 10 to 20% चार्ज बढ़ जाता है, उसके अलावा कुछ बढ़ता नहीं है. We interviewed 2 travelers on the same issue. Obviously not for the government buses, but definitely the private buses, they definitely hike the prices at least twofold. I've been traveling since 10 to 11 years to my hometown, and I have seen this a lot. So that's purely because of the business, I think. Monthly तो मेरा होता था 800 होता था. Fare is also very cheap. Like frequent traveler
It seems like the travelers will have to endure and make peace with the price hikes as travel prospects between the cities increase with Diwali and Navratri season approaching. This is Payushi Bisht with camera person Trisha Ghosh reporting for SIMC Voices. PCMC has approved a survey at Rakshak Chowk to reduce traffic congestion and improve commuters' convenience. Our reporters Pooja Mahabadi and Shreya Varanasi will take you through the story. We are now standing at Rakshak Chowk where Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation has approved a new subway to be inaugurated at this exact chowk. This will solve the year-long problem that Sangli-Kivle Road has been suffering, which connects Pimpri-Chinchwad to Mumbai and Pune, passing through key areas like Wakad, Ravet and Hinjewadi. This subway promises to connect with people from Dange Chowk to a Aund military station, reducing travel time and fuel consumption. Situated near the Aund military station, Rakshak Chowk is a critical junction that connects military and civilian routes. It plays a key role in the local traffic flow. Recently, the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation approved plans for a new subway at this location. This aimed at easing congestion and improving accessibility for commuters. This development not only enhances transportational infrastructure, but it also pays a tribute to armed forces, making Rakshak Chowk a significant landmark in the Aund area. So what happens, like this patch is all good, but whenever we go forward, so at that patch the roads are totally narrow. So maybe the 4-lane road or underpass will definitely help to like solve our daily commute problems and save up. Yeah, it will be help because nowadays people who are traveling to company, they travel solo, but they use their cars and all those vehicles. So what happens, like the road size, due to the road size, the blockages are happened. मदत तर होती त्यांची ट्रॉफिकवाल्यांची मला, पण कसं आहे ट्रॉफिक हे जे मंत्री आले जर सिग्नल बंद करतात मग पूर्ण ट्रॉफिक जाम होतो. त्याचा त्रास तो आपोआप सिग्नल बंद करून ट्रॉफिक थांबवून मग ते त्या गाड्या गेल्यानंतर मग सोडतात ना, त्यावेळेस फक्त ट्रॉफिक होतो. आणि जर पुन्हा अडचण हे झालं सिग्नल बंद झाला ट्रॉफिक होतं त्यावेळेस, तर त्यावेळेस एवढं ट्रॉफिक म्हणजे हे होत नाही, म्हणजे जास्तीत जास्त. पण जे गाड्या येतात ना मंत्री यांच्या, त्यावेळेस सिग्नल बंद केला ना पूर्ण ट्रॉफिक जाम होतं, त्यावेळेस मग निघायला वेळ होतो. We reached out to several civil engineers at PCMC, the team responsible for the survey project at Rakshak Chowk. While they did not refuse to answer our inquiries, they were unable to provide a response at the time. According to officials, the subway that is to be built at this chowk will provide a lot of relief to the people living near the chowk. This will be inaugurated after Diwali and hopefully will provide some relief to the residents of Rakshak Chowk with increased vehicular flow and reduced congestion. This is Pooja Mahabadi with camera person Shreya Varanasi for Voices, Pune. A heavy sports complex lying abandoned is Sutarwadi and its present state. The premises is abandoned and is used for all sorts of antisocial activities. We have a reporter Ajay Hanje and Ramit Mehrotra on ground to tell us more about the story. We are here at the Bharat Ratna APJ Abdul Kalam Vyayamshala, and as you can see, the place is not in its best shape. The Pune Municipal Corporation invested crores of rupees into the construction of the gym, but the place is completely abandoned with no footfall and no staff to look after. Current situation of this gym is totally destroyed. Total waste of hard-earned money of taxpayers. It was in 2016, December I guess, that the opening was done by PMC. Whenever we approach PMC just says we'll look into it, we'll take necessary precautions which we can, but nothing is done. The premises is largely being used for segregating waste collected from various locations. According to the people working here, the gym has been closed for around 4 to 5 years. PMC has been planning to reopen the place, but the exact date is still unknown. The only hope for this place is rapid intervention by the civic authorities and the place being fully equipped. This is Ramit Mehrotra with camera person Ajay Hanje for Voices, Pune. The increasing congestion at Pune Railway Station is becoming a problem for commuters as well as auto rickshaw drivers. They have to wait for 1 hour for parking spaces.
Our reporters Shruti, Sneha and Faiz Hoda will provide more information on the same. Despite repeated complaints from visitors, the parking situation here at Pune Railway Station comes to deteriorate. The situation here has become so worse that people have to wait till 1 hour or 45 minutes to meet their visitors coming. With poorly maintained lanes and allegations of overcharging, it seems commuters will have to wait till September next year, as the current contractor has hit term till September next year. और यहाँ पे रेलवे स्टेशन के जगह पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। पार्किंग की जगह भी बहुत कम है और अगर हम व्हीकल उसमें भी रखते हैं तो उसका ख्याल कोई नहीं रखता। उसमें मतलब कि अगर हाफ डे भी रखा तो ऐसा लगता है कि वो 2 महीने से बंद पड़ा है, वो इतना ख़राब व्हीकल होता है और स्पेस भी इतनी कम है। और जो लोग वहाँ पे पार्किंग का केयर टेकर है वो लोग तो मतलब हेल्प भी नहीं करते गाड़ी रखने के लिए और निकालने के लिए भी। अगर वो यहाँ पे दूसरी जगह पे ये करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं उसका, तो वहाँ पे भी मतलब डैमेज हो ही जाता है। इतना बहुत ख़राब इश्यू है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि पार्किंग स्पेस का कुछ तो देखो। आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे हम 10-12 साल से। क्या क्या दिक्कतें आती है यहाँ पे पार्किंग में, या फिर पार्किंग का क्या सिचुएशन है पुणे रेलवे? यहाँ तो पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। गाड़ी लगाने के लिए सबको जगह मिलती है, करती है, कोई इशू नहीं है। पैसेंजर का भी कोई इशू नहीं है। जिसको प्रीपेड का ऑटो करना है वो प्रीपेड से जाता है, जिसको तय करके जाना है वो तय करके जाता है। बाकी के बसेस वगैरह है, मेट्रो अभी जस्ट स्टार्ट हो गया है, कोई मेट्रो से जाते हैं। ऐसा पैसेंजर का कोई इशू नहीं है। और आपको लगता है कि यहाँ पे इस साइड पार्किंग का और स्पेस देना चाहिए गवर्नमेंट को? पार्किंग का तो स्पेस चाहिए मैडम, क्योंकि रिक्शा इतने बढ़ गए कि कभी कभी गाड़ी अगर लेट हो गई है तो गाड़ी लगाने में प्रॉब्लम आती है हमें। तो हम लोग बाहर जो लगाते हैं गाड़ी तो पुलिस वाले तकलीफ देते, जैम्बर लगाते हैं, वो फाइन मारते, वो इश्यू है पार्किंग का। Despite repeated complaints, the situation here at Pune Railway Station continues to deteriorate. The situation has become so worse that visitors have to wait for 1 hour 45 minutes to get their parking and meet their relatives and friends. But it seems, with poorly maintained lanes and allegations of overcharging, the people of Pune will have to wait till September next year, as the contractor has a contract till then. This is Shruti, Sneha reporting for SIMC Voices at Pune Railway Station with camera person Faiz Hoda. MNS leader threatens protest over release of the Legend of Maula Jatt in India, citing strong opposition to Pakistani films. Our reporters Meghna Barik and Kumar will provide us with more detailed information about it. The Maharashtra Navnirman Sena or the MNS chief Raj Thackeray had warned theatre owners against the screening of the Pakistani film The Legend of Maula Jatt. Maintaining his firm stance on opposing the Pakistani content, Thackeray asserted that any theatre showing the film could face serious consequences. पे ऐसा कोई थिएटर तो मतलब कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता थिएटर पे, बट मतलब कह सकते हैं कि लड़ाई होने के चांसेस कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, बट उसके लिए पुलिस रहती है हमारे पास, शिवाजी नगर की पुलिस रहती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो वो हमेशा हमारे पास यहीं पर ही रहती है हमारे, अगर ऐसा कोई भी मूवी देखनी चाहिए हमारे पास। बट ऐसे बोला हुआ तो नहीं होता ना कि आपको कि ये मूवी मत स्क्रीन करना। अगर ये मूवी नहीं चलानी है तो बोर्ड से ही नहीं आएगी, बोर्ड से ही पास नहीं होती है। ये होता है कि बोर्ड वाले ही आपको पास नहीं देंगे इस चीज से, तो वो वहीं से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, थिएटर तक बात ही नहीं आती इस चीज से। This had sparked widespread discussion, raising questions about the impact on cultural exchanges with the neighboring country and the business of the film industry. एवढं नाही डायरेक्ट, कारण की पोलीस प्रोटेक्शन असलं की नाही एवढं प्रॉब्लेम। हां, म्हणजे पोलीस प्रोटेक्शन कसं असतं, जर तुमचा पिक्चर समजा फ्रायडेला रिलीज होतो पिक्चर, बरोबर, पहिले 3-4 दिवस पिक्चर चालतो जोरात, त्यावेळेस गर्दी जास्त असते। नंतर एकदा 4-5 दिवस गेले, शो कमी झाले तर मग काय प्रॉब्लेम नाही। पण सुरुवातीला जर तो पिक्चरला बंदी आली सगळीकडे, आता मध्ये तो दीपिका पदुकोणचा पिक्चर होता, त्याच्यावरती त्यांनी भगवा घातलं होतं, दाखवायचं त्याला प्रॉब्लेम। हां, तर नंतर मग ते केलं नंतर जो सीन नको तो कट केला जातो।
म्हणजे जे नको आहे ते त्याच्यामुळे म्हणजे जी पब्लिक आता पब्लिक काय काय एक वैचारिक नसते ती कसे आपल्या लोकांना जे वाटतं ते करतात ते काय काय वेळेस काय होतं असं जर काय एकदम प्रॉब्लेमॅटिक असलं तर पोलीस प्रोटेक्शन येते. The topic of Indo-Pak cultural ties have resurfaced with public opinion wondering if political interference helps or harms the art. With camera person Meghna Barik, this is Ishika Kumar for SIMC Voices. With this, we have reached the end of the episode of Voices. This is Meghna Barik. And this is Kumar Siddhartha as your host. Signing off.